Good morning, sir. Very good morning. So please make yourself visible. Please switch on your videos, all of you. And how many students are there? There are some 20 students. Well, let's start the class because already 5 minutes have lapsed. Well, in the last classes, we had discussed the concept of receptors. And we had discussed a bit about the concept of receptors, what receptors are all about, and what is the normal function of receptors, and how do they work, and what is the contribution of receptors in action of drugs. So we had discussed that receptors are one of the most important targets for drugs, and we had discussed 4 targets of protein targets for drug action, and receptors are one of the most important drug targets. Now, additionally, we had discussed that these receptors are highly specific. They work in a very specific and selective manner, and only concerned drugs only drugs bind to their respective receptors. So that means we have a range of receptors in our body, and finite drug binds to respective or finite number of receptors or fixed number of receptors. That means each and every receptor is each and every drug is having its own type of receptors to which it is binding, and a drug cannot bind to all type of receptors. It's not like that, and why it binds only to limited number of receptors or fixed number of receptors? The reason behind is the structural similarity. Based on the structural similarity of the active site of the drug, or the structural similarity of the molecular moiety of the drug as well as the active site of the receptor, if it is matching, only then the receptor drug can bind to its receptor. So we have discussed certain types of receptors, and today we'll discuss what happens when drug binds to the receptor. So today we'll be studying drug receptor interactions. When drug binds to the receptor, exactly what happens, and how receptor is activated, and how receptor once the receptor is activated, what kind of functions are being executed and how they are executed. This mechanism needs to be understood, because this is the basics of pharmacodynamics. And why we are studying pharmacodynamics? Because we want to understand the mechanism of action of drug, how the drug is working. And say, for example, you have taken any particular drug, and after taking the drug, after a certain lag time, you see the visible or observable pharmacological response of the drug. So that response or drug action is okay, but how it's being generated, what are the internal molecular mechanisms behind which is going inside the body, we should know, and we should try to visualize. That's why drug receptor interactions has been planned in a separate class, and in next class also we'll be elaborating this particular topic, and then you can appreciate the mechanism of drug receptor interaction. So before understanding all those things, we need to understand certain terms and definitions, because we'll be talking all these things in certain terminology. Every time we cannot discuss in layman's language. We need to define this drug receptor interaction in certain terminologies. So we should understand. The very first term is affinity and efficacy. As you might be knowing, affinity means you have any tendency or inclination for anything, tendency. So in terms of drugs, what this word affinity describes, this affinity means it describes the tendency of a drug to bind or to combine to a particular type of receptor. If it is having strong tendency to bind, we can say the affinity is strong or affinity is good. If it is having weak tendency to bind, we can say the drug is having weak affinity for the drug.
You guys, you people may have friendship with your batchmates. Some you may have some good friendship, some roommates or very good friends. So you may have affinity for some other person, strong affinity or some weak affinity or no affinity at all. So similarly for drugs also, based on their chemical structure, because we'll be studying the different kind of bonding which occurs between the drug and the receptor. Once the drug binds to the receptor, definitely there is some bonding, maybe some sort of bond, covalent bond or hydrogen bond or any kind of bonding maybe or association may be going on. So this affinity in fact describes the tendency of the drug to bind for a particular type of receptor. Now this efficacy is a bit different. Now once the drug has bound to the receptor, after binding to the receptor, what can happen? The receptor may function or the receptor may precipitate the physiological response. Say, for example, whatever drug you have taken, the physiological or the pharmacological response. Say, for example, if it is antihypertensive drug, if you are taking a drug which reduces your blood pressure, enhanced blood pressure. So the what is the pharmacological response? The pharmacological response of the drug is to reduce the blood pressure, right? So once you have taken the drug, your drug has bound to the respective receptor in your body, and after drug receptor binding or drug receptor interaction, after certain time you see that your enhanced hypertensive condition gets normalized, your blood pressure gets reduced. So that is the physiological or the pharmacological response for which you were taking the drug. Now this efficacy, the affinity was you were taking the antihypertensive drug, so that antihypertensive drug was having affinity for the receptor. That's why it was binding. If the drug may not have affinity for the receptor, in that condition, what will happen? There won't be any drug receptor interaction because the receptor is not having any affinity, right? So for any drug receptor interaction to happen or for any kind of drug receptor binding, what is the most important thing? The drug should have affinity for the receptor. If it is not having, no work will happen. Once it is having affinity, what can happen? The concerned physiological response may be affected, may be affected. So that particular phenomenon, after binding of the drug to the receptor may show some sort of efficacy. That means concerned physiological response may happen. So what is efficacy? It is also called as intrinsic activity. Why it is called intrinsic activity? Because it is the inbuilt property or inbuilt capacity of the drug to produce a particular pharmacological response. So if I am having any inbuilt capacity to make some good drawings, only then I can draw or some portraits or any drawing. If I'm not having that property, I cannot draw. So that efficacy, if any person is making some very good painting, what it indicates? It indicates that he is having the inherent property of, he is possessing the inherent property of a painter or a like that. So this efficacy shows the intrinsic activity of the drug, which can produce the maximal effect the drug can produce. Whatever physiological responses you are getting, it is due to the efficacy of the drug. Now there were two terms have come up, affinity and efficacy. Both of these are closely related, but they are different, entirely different also. Now this partial agonist and antagonist, and I'll come back after the definition. I'll come back to the efficacy component after 3-4 minutes. Now the next term is potency. If somebody is saying that he's a very potent person, that he is a very strong, he is a very influential person, he's having a strong, so it indicates to the dynamicity of the person, you can say. Potency in case of drugs, what does it indicate?
potency, if any drug is very potent, very strong, what does it indicate? That it will show more pharmacological response. It will show maximum pharmacological response at lower doses. If you are giving very good high dose, obviously in that case higher pharmacological response will happen. But the potency, by increasing the dose, the potency of the drug is not increasing. Potency of the drug, it is the inherent property of the drug. It indicates if the drug is can produce a very strong pharmacological response at a very very low doses, we can say the drug is more potent. We can compare two drugs, drug A and drug B. Drug A produces analgesic action, pain relieving action at the dose rate of 5 milligram per kg body weight, and drug B produces the same analgesic action at 10 milligram per kg body weight. So which drug is more potent, drug A or drug B? Who can answer? Who can answer? Please unmute yourself. And there are two examples. First case is there are two drugs, drug A and drug B, and for analgesic action, you have to take the 5 milligram tablet of the drug. I'm simplifying the case. And for the same pharmacological response for drug B, you need to take 10 milligram tablet. दोनों में कौन अच्छा ड्रग होगा? मोर पोटेंट ड्रग कौन सा ज्यादा होगा? ए और बी? ए सर, ए सर, ए। Why? सर क्योंकि वो डोज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Yes, because for the same effect you need a lower doses. Less amount. Yes. So A is, we can say it is more potent, right? Yes, apart sir. from why this dose is more important in pharmacodynamics? Why we are getting the same physiological or the pharmacological response with the B also, only we have to double the dose. What happens? Only you take the double dose. Why you are bothered about that? We should prefer A and more than B. So dose is a big parameter. Why we are saying that dose we should take into consideration? We should try to take lower doses, because dose is directly proportional to toxicity of the drug. Say for example, if you are taking any drug and you are feeling the side effect, say for example, side effect or toxicity. If I'm taking any drug for, if my father is taking everyday drug for high blood pressure, and that drug is having some, you can say, hepatotoxic action, which is having some toxic action on the liver. So the toxicity or is directly proportional to the dose. If you are taking more dose, there will be more liver damage or the toxicity. If you are taking lower doses, you will feel less toxicity. So dose is directly proportional, toxicity is directly proportional to dose. So the dose becomes important. If you are taking lesser doses and if you are getting the good pharmacological response at lower doses, we should try to take the lower doses. And dose is also related to cost also, because this 5 milligram tablet may be cheaper in comparison to 10 milligram tablet. That is the another concern, which is not directly concerned with pharmacology, but dose is important. Toxicity and a lot of other considerations are dependent on dose. So this potency is something which refers to the dose of a drug. And a drug, we can say that a drug which is administered at lower doses to produce the same pharmacological response will be more potent. So why a drug is producing, you can say why a drug is producing more pharmacological response at lower doses and the other drug is producing this
lesser pharmacological response, and even at higher doses. Why is this difference? What is the molecular mechanism behind it? The molecular mechanism is the affinity. Say, for example, you are two roommates or friends, and you are having good friendship with your roommate. You may not have the same friendship or the intensity of friendship with all of your batchmates. So the closest friend, if they sit together for any preparation, they may perform the duty in a more effective way in a shorter duration of time. So why they're executing the shorter duration of time? It is due to their interaction. It is due to their affinity. So the affinity of a drug for a particular receptor, it is the guiding factor which decides the potency of the drug. A drug which is having very strong affinity for the receptor, it may be more potent. I'm saying maybe. There are some other aspects also we'll discuss later. So potency, you can say that it is not directly proportional to dose. If a drug is more potent, that means it will be effective. It will be effective at lower doses. So potency is inversely related with dose. If you have to take higher doses for the same action, that means the drug is not that potent. It is less potent. That is why you have to take more doses, right? So potency is a relative phenomenon. It is not an absolute phenomenon. You are comparing two drugs with reference to certain doses and with the same pharmacological response. So it is not an absolute. It cannot monitor in milligram or in certain units. It is always a comparative aspect, that I am more potent than you, drug A is more potent than B and C, like that. So it is always a relative concept. It is not an absolute. Any doubt? You are clear till this point? Any person is having any doubt? Then we should proceed further. Now, apart from these terms, there are certain more terms we should understand. Only then we can study the drug receptor interaction. One term is selectivity. You don't be bothered about the writings. I'll make you understand all these things. Just by saying this name, it is selectivity. So it is, what is selectivity? There is some selection. A drug, say for example, a drug, you take any drug A, right? And the drug A is, say for example, I'm taking any fictitious example, and the drug A is, you are saying that it is a highly selective drug. Selective means what it will select? The drug A may have certain mechanism of action. The drug A may act in the body by binding to certain receptors in the body. Okay, so the drug A may have its receptors like A1, A2. The drug A is having two receptors in the body, A1 and A2. Okay. Now the question arises whether drug A is having same affinity for A1 and A2. If I'm having two children, do I have equal affinity for both of us? In case of parents, it is equal, but in case of drugs, it is not the same. It may be same, it may not be same. Drug A may have more affinity for A1, and it may have lesser affinity for A2. Or we can say drug A is having 3 times affinity for A1 and it is having 1 time affinity for A2. So in that case, what is happening? And there, say for example, if you are giving any drug A, and after administration of the drug, after a certain time, there is pharmacological response. If ये ड्रग अगर एनाल्जेसिक ड्रग होता तो एक सर्टेन डोज लेने के बाद जो हमारा पेन फीलिंग है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, बट एक थ्रेशोल्ड डोज होता है. एक मान लो कि इस ड्रग का जो डोज है, अभी हमने इस ड्रग का 500 मिलीग्राम का डोज दिया, 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट लिया ड्रग ए,
ठीक है, और इसको लेने के बाद हमारा पेन फ्री हो गया, अभी जो पेन बॉडी एक था वो फ्री हो गया। इसका डोज कम कर लें, इसका डोज कम करते 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 1 मिलीग्राम डोज दें, तो हो सकता है इस डोज पे बॉडी पेन नहीं का डाउन, ये काम नहीं करे। तो ऑलवेज देयर इज ए थ्रेशोल्ड डोज, एक मिनिमम डोज है, इससे ऊपर आप डोज दोगे तभी वो ड्रग काम करेगा। विल डिस्कस दीज थ्रेशोल्ड डोज एंड ऑल दिस थिंग्स लेटर ऑन, बट अब you have to administer any particular drug in a minimum dose, उससे नीचे देने तो वो काम नहीं करेगा। Now in case of drug A which was having selectivity for A1 and A2, A1 को 3 times ज्यादा सेलेक्टिव है, A1 को A2 से A1 को 3 times ज्यादा सेलेक्ट करता है, 3 times ज्यादा उसके लिए एफिनिटी है। अगर इसकी एक लोअर डोज लेंगे, इस ड्रग का एक लोअर डोज हम सेलेक्ट करें, लोअर डोज, इस कंडीशन में हो सकता है कि सिर्फ A1 को एक्टिवेट करे, A2 को ना करे, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। दैट मींस ये मोर लोअर डोजेस पे A1 एक्टिव हो जाएगा, A2 नहीं हो सकता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिविटी। Selectivity, now what happens, you can see, now you try to read all these things. Selectivity depends on capacity of a drug to preferentially produce a particular effect. अगर वो ड्रग जो है अपने उसके 3 रिसेप्टर्स हैं और हर एक रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो क्या क्या होगा, सारे के अलग अलग फंक्शंस होंगे। रिसेप्टर A1 को बाइंड करेगा तो हो सकता है हार्ट रेट एक्सेलरेट हो, A2 को बाइंड करे तो GI मोटिलिटी डिक्रीज हो, ऐसा हो सकता है। अभी हम लाइव एग्जांपल भी आपको देंगे। तो now this selectivity says that if you are giving any particular drug, only a particular A1 receptor may be activated, और A1 एक्टिवेट होगा तो इसी का रिस्पांस होगा, A1 का वो रिस्पांस होगा, A2 A3 का रिस्पांस नहीं होगा। Now this selectivity it depends on the capacity of a drug to preferentially produce a particular response. सिर्फ A1 के रिस्पांस को ही प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी अगर नहीं होता है, we can say that the drug is selective for A1 receptor. Now the characteristic effect of the drug is produced at lower doses than those required to elicit other responses. अगर इसमें A2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता तो अलग रिस्पांस होता, A3 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता तो इसका अलग रिस्पांस होता, लेकिन हमने इतना ही डोज दिया लोअर डोजेज में कि सिर्फ A1 रिसेप्टर ही एक्टिवेट हो रहा है। तो this is what it is the characteristic effect of the drug is produced at lower doses than those required to elicit other doses. अगर हायर डोज देंगे तो A1 A2 A3 सारे के रिस्पॉन्सेज विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में एक ड्रग है क्लेनब्यूट्रॉल, इस ड्रग के बारे में बाद में बताएंगे। एक ड्रग है क्लेनब्यूट्रॉल, इट इज हैविंग एफिनिटी फॉर बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स बोथ। ये जो एडर्जिक रिसेप्टर्स हैं, यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो there are two components in autonomic nervous system. One is sympathetic nervous system, other is parasympathetic nervous system. फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। जब हम एक्टिव बॉडी एक्टिविटी कंडीशन में होते हैं, जब हम दौड़ रहे हैं, फियर फ्लाइट कंडीशन में हो, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। उस नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन एक्ट करता है। वो रिसेप्टर्स 2 टाइप के हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर अल्फा 1 अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा रिसेप्टर्स हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, 3 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। ये सब के फंक्शन डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा, अभी इनके लिए परेशान मत होइए। अभी आपको सिर्फ सेलेक्टिविटी समझना है कि पर्सन इज हैविंग सेलेक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर टाइप। मेरे को अगर खाने में अगर 5 टाइप के वेजिटेबल्स मिल गए हैं और गोभी मुझे पसंद है तो आई सेलेक्ट इट, और अदर्स को हो सकता है कम, तो दैट इज द सेलेक्टिविटी। रिसेप्टर इज आल्सो, drug is also having selectivity for any particular type of receptor. Why? Because it is having more affinity for that receptor.
तो अगर बहुत लोअर डोज में थे, अगर मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगी, थोड़ा ही खाना था, एक गोभी टुकड़ा खा करके हम चल देंगे, लेकिन बहुत भूख लगी और गोभी 2 ही पीस है, तो आलू भी खाना होगा, बैंगन भी खाना होगा। तो इफ यू आर गिविंग एट हायर डोजेस, all receptors will be activated, but if you are giving at lower doses, only one receptor may be activated, which is having maximum selectivity for the drug. तो selectivity का meaning clear है, it is only selection. आपको एक स्टोर में पहुंचा दें और बोल दिया जाए कि नहीं एक ही कोई आइटम लेना है, तो जो बेस्ट होगा फेवरेट वो उठा के जाओगे आप, दैट इज द सेलेक्टिविटी। ड्रग का भी सेलेक्टिविटी होगा जिससे उसकी मैक्सिमम एफिनिटी होगी। कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? लाइव एग्जांपल्स, क्लेनबिट्रॉल का क्या फंक्शन है बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ सेलेक्टिविटी समझे क्या है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिसिटी। इसके पहले था सेलेक्टिविटी, नाउ हियर इट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? अभी मैं स्क्रीन वाइट कर रहा हूँ, आप पढ़ने में परेशान हो जाएंगे। What is this specificity? Specificity जैसे कह सकते हैं कि बैट्समैन इज देयर, बड़ा स्पेसिफिक, ऑफ साइड में आता है तो ऑफ साइड में मारता है, एक स्पेसिफिक स्टाइल है उसका काम करने का। तो स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं कि सिलेक्टिविटी के केस में मैंने बताया कि ड्रग जो ए है वो अपने 3 रिसेप्टर से बाइंड करता है, A1 से भी बाइंड कर सकता है, A2 से भी कर सकता है, A3 से भी कर सकता है। So drug A was selective for A1, it was 3 times selective for A1, it was 2 times selective for A2, and it was 1 time selective for A3. लेकिन ये selective तो था, specific नहीं था। ये पूछे कि ड्रग A A1 से बाइंड करता है कि A2 से कि A3 से? आंसर इज all. So is it specific for A1? No. Drug A is not specific for A1. It is non-specific, it is binding to all 3. ऐसे भी बॉडी में ड्रग्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर से ही बाइंड करता है। अगर A1 से करता है तो सिर्फ A1 से करता है और कोई नहीं किसी से करता। In that case, what will happen? It will always bind with A1. आप ज्यादा डोज दो, कम डोज दो, A1 से ही बाइंड करेगा। तो now coming to the specificity, अब specificity का थोड़ा definition पढ़ लीजिए। अब इसमें एक और concern है। Now this drug A is binding to only one type of receptor. We are giving the name of the receptor is AR, A receptor. Now drug A is binding to only particular one type of receptor in the body, and the name of the receptor is AR. अब ये रिसेप्टर बॉडी में कहाँ पे है? किसी एक ही ऑर्गन में है क्या? सिर्फ हार्ट में ही है, लिवर में भी है, मसल में भी है, कहाँ कहाँ? हो सकता है रिसेप्टर पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ द ड्रग मे हैव द ड्रग इज स्पेसिफिक, द ड्रग इज ओनली बाइंडिंग टू AR, बट जो हार्ट के AR रिसेप्टर्स हैं उससे हो सकता है ज्यादा बाइंड करे, किडनी के AR रिसेप्टर से ना बाइंड करे या कम बाइंड करे। ये सेलेक्टिविटी, ऑर्गन सेलेक्टिविटी हो सकता है, बट द ड्रग इज स्पेसिफिक, जब भी बाइंड करेगा AR से ही करेगा। सो नाउ you try to read this. When all the effects produced by a drug are due to a single mechanism of action, हो सकता है उस पर्टिकुलर ड्रग A का एक रिसेप्टर AR रिसेप्टर से वो बाइंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। इसका हो सकता है 5 अलग अलग टाइप का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो। हार्ट में बाइंड करेगा तो हो सकता है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करे, ठीक है। लीवर में बाइंड करे तो हो सकता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाए, मसल में बाइंड करे तो हो सकता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए। तो 3 टाइप के रिस्पॉन्स हो गया ना। एक तो है इंक्रीज इन हार्ट रेट, सेकेंड हो गया इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, थर्ड हो गया इंक्रीज इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। रिस्पॉन्सेज तो 3 टाइप के हो गए, बट द mechanism of action was same. It was binding of the drug with AR receptor. If it is binding in the heart, there is increase in heart rate. If it is binding in the liver, there is increase in rate of glycogenolysis. If it is binding with the skeletal muscles, there is muscular contraction.
So pharmacological responses are manifold or various, but the mechanism of action is common, fixed. So in that case, we will say that drug is specific. A specific drug may have multiple pharmacological responses, but the mechanism of action is the same. That is why we are saying that a specific drug is having a single mechanism of action, okay? But the pharmacological responses may be diverse. So specific drug acts only at one type of receptor that we have studied, but it may produce multiple pharmacological responses. Why? Why it is producing multiple pharmacological responses? It is due to location of receptors in various organs. Because the receptor is located in various organs, it may have multiple pharmacological responses. Right? Okay. Any doubt? कुछ doubt है यहाँ पे? मन में कुछ ख्याल doubt आ रहा हो तो you can share. Okay. Sir. Yes. So with single mechanism of action, is it possible to have a diverse response? Why not? That is why specificity is said. Drugs, say for example, yes. So response comes with the mechanism of action. It is specific. Response comes with mechanism of action. Response comes when drug binds to the receptor. What I am saying that in a specific, if the drug is specific, it is binding only to one kind of receptor. It will not bind to A2, A3 or anyone. It will only bind to A1. Okay. So in that case, I'm saying that it is specific drug because it is having a fixed receptor to bind. But the receptor may be distributed in various organs. Say for example, that is if the receptor is present in heart, and the function of the receptor is to increase the heart rate, is to increase the force of systole and diastole. So what pharmacological response we can assign with the kind of receptor present in heart? To regulate the heartbeat. So the function of this particular drug in the heart is to regulate the heartbeat, to increase the heartbeat. But if it is present in skeletal muscle, heartbeat function cannot be, we can assign with the skeletal muscle. It may be assigned with increased muscular contraction or relaxation or anything like that. If it is present in the vessels, if it is present in capillaries, it may be arterial dilatation or contraction. So the function is changing based on the organ. लिवर में लिवर का फंक्शन होगा ना, हार्ट का फंक्शन कैसे होगा? मैं अभी पेन लिखा हूं यहाँ पे, पेन अगर मैंने लिया है पेपर से तो पेपर पे लिखने का काम करूंगा, पेन अगर पेपर नहीं है तो किसी को मारने का काम कर सकते हैं, बट पेन इज द सेम. तो why I am saying it is having diverse pharmacological actions? Because the receptor is having diversity in location. The receptor is diversely located in multiple organs. ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको देता हूँ. Say for example, one neurotransmitter is acetylcholine. You might have studied what is acetylcholine. Acetylcholine neurotransmitter है, universal neurotransmitter है body में, ठीक है. Now this acetylcholine binds to two kind of receptors. Now this acetylcholine binds with first kind of receptor is called muscarinic receptor. The second kind of receptor is called nicotinic receptor. So acetylcholine is having selectivity. Now there are two kind of receptors, muscarinic and nicotinic receptors, to both of which acetylcholine binds. But acetylcholine is having more selectivity for muscarinic receptors, many times more. So what happens if you are giving acetylcholine at lower doses, or once acetylcholine in normal neurotransmission, acetylcholine is discharged or released, only muscarinic receptors are activated. One example of neurotransmitter acetylcholine, you all are aware of this acetylcholine. This acetylcholine is a neurotransmitter in our body, and once this acetylcholine is released, it binds to two kind of receptors. The first kind of receptor is known as muscarinic, and the second is a nicotinic receptor. So acetylcholine binds to both of the receptors, but it is having more selectivity for muscarinic receptor. And it happens that at normal
dose rates in normal examples, wherever there is neurotransmission, wherever there is release of this acetylcholine neurotransmitter, only muscarinic receptors are activated. And nicotinic receptors are activated at higher doses, once you are giving the higher dose of the receptor. So this was the example of selectivity of the drug, for selectivity of acetylcholine neurotransmitter for muscarinic type of receptors. It was not selecting at normal doses to the nicotinic receptors. Now these muscarinic receptors are again divided into 5 types. There are 5 types of muscarinic receptors: M1, M2, M3, M4, and M5. Okay. Again, this acetylcholine may have selectivity for M1. It may have more affinity for M1 than M2, M3, or M4, like that. So again is the case of selectivity here. Now this M1 receptor may be distributed in various tissues. It may be distributed in heart. It may be distributed in smooth muscle of the GI tract. It may be distributed into the smooth muscle of the respiratory system. So smooth muscles in respiratory system. What will happen? It will be once the smooth muscles in the respiratory system, the muscarinic receptors in respiratory system or the respiratory smooth muscles, once they are activated, what will happen? The response is muscular contraction, and the overall physiological response is bronchoconstriction. Your bronchi are constricted. It is bronchoconstriction. That means your air passage gets narrowed once you are sleeping. Your acetylcholine discharge is more. Once you are in rest, your acetylcholine discharge is more, and your bronchi gets narrowed, because the air passage, requirement of air passage gets reduced. Once you are running, your bronchi are dilated. Your requirement of oxygen is more. These are things we'll be discussing in great detail in autonomic nervous system. So I was discussing the muscarinic receptors in respiratory system. The function was bronchoconstriction. Take the example, these muscarinic receptors in heart. What will happen? Once you are sleeping, your heart rate gets reduced. So there will be reduction in heart rate. Your heart rate will be reduced. So the physiological function or the pharmacological function, the same receptor is having 2 different kind of functions. Different function in respiratory system, different function in heart rate. In GI tract, you see a reverse phenomenon. There is increase in GI motility. GI motility, the peristaltic contractions and the increase in the muscular contractions of the bowel, it is increased, because once you are sleeping, your digestion is enhanced. You are having good digestion. That means if you are having good sleep, you are having good you are having good digestion. So you can see the same receptor is having different 3 kind of functions in 3 different organs. It was the same receptor, it was the same drug acetylcholine, which was binding to the same kind of receptors. It may be M3. I think this is the M3 receptor in all these 3 organs. So the same M3 receptor is doing 3 kind of different functions. It is, everything is same. It is what we are visualizing from 3 different angles. So selectivity and specificity, they are nothing. They are simply made to for the purpose of study, for the sake of study, to visualize the pharmacological responses of drugs, or to visualize the drug receptor interactions. We have chosen these 2 words for differentiating things properly. Selectivity was simple selectivity for anything. In our life also, I prefer sweets than the salty food. Some people may prefer some sour fruit. So that is the selectivity. But once the same selected
thing may have different functions in different organs. So that is the specificity. I think any doubt is there, Sony? Anybody? Any No, doubt still? I think your doubt is clear. Try to read more with more examples. You'll make yourself very clear. Just 5 minutes more. I'll discuss some more things. So this was the specificity, and we can cite one example of what I wanted to say, that a specific drug, a drug may have multiple actions. A drug may have so many actions. Say, for example, take the example of a drug atropine. This atropine, if I'm giving one example, you may be confused because you have not studied these drugs. This atropine is anticholinergic. It works in opposite direction with acetylcholine. So this atropine may have so many different functions in the body with the same mechanism of action. So that is, you can say, it is the atropine is specific in action, but it is having different functions in different organs. So it is working with a common mechanism of action, but since those receptors are located in different organs, different functions are there. I would like to show you one example of a non-specific drug. One non-specific drug is, what is tranquilizers? Any idea? Tranquilizers? Any idea? Yes, Any person? sir. Yes. What are these tranquilizers? Antidepressant, sir. Antidepressant. Depression को reduce करना. Okay. Anything else? Anybody? Sir, subconscious state में होते हैं इसमें. So these tranquilizers are, in fact, they are sedatives. They will depress your central nervous system, and these tranquilizers are used for restraining wild animals or for restraining any animal. If you inject any tranquilizer to any person or any animal, what will happen? The animal will become very calm and quiet and will be depressed. If you inject tranquilizer by dart gun to a tiger, the tiger may be depressed, and you can examine the tiger, and after some time, once the action of tranquilizer goes off, the animal will become in active condition. So these are the tranquilizers, uses of tranquilizers. One example of tranquilizer are phenothiazines. Phenothiazine is a type of tranquilizer. It is a chemical agent, but it is having different actions, and those all different actions are by different mechanisms. A drug may bind to one receptor only. If it is binding to only one receptor, we will say that the drug is specific in action. If the drug is binding to more than one receptor, and if it is binding more to one receptor and less to other receptor, we will say that the drug is non-specific. It is selective in action. The drug may not be selective. The drug may bind to either one receptor or two receptor or three receptor, wherever it finds to. If a drug is binding to 4 type of receptors, receptor A, B, C, D, binds to all the receptors with the same intensity, and there is no selectivity also. Whenever जो भी receptor मिल जाए उसे attach कर दे. So what we will say? We will say that this kind of drug is non-specific in nature. जो मिल जाता है अपने को खाने में, जो भी मिल जाए हम खाना खा लेते हैं. तो बोले कि इनका डॉक्टर साहब का कोई चॉइस नहीं है कि चपाती खाते हैं कि पराठा खाते हैं, जो मिल जाएगा. I am non-specific. जो मिल जाए खा ले. So there are certain drugs like this phenothiazine tranquilizer. It is non-specific in action. It produces sedative action. नींद आती है इसको लेने के बाद. Sedative action क्यों होता है? It happens due to increased rate of dopamine turnover in the brain. Dopamine turnover or dopamine synthesis is being increased in the brain, and which produces sedation. It produces antiemetic action. इससे उल्टी कम होती है, emesis को prevent करता. Why? Because एक brain में एक chemoreceptor trigger zone है जो emetic center से related है, और ये CTZ को depress करता है. इसकी वजह से emesis को prevent करता है. ये अलग मैकेनिज्म हो गया इसका. फिर हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. व्हाई?
क्योंकि ये एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेड, ये जो एडर्जिक रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, मस्कुलर पेन को रिड्यूस करता है। व्हाई? क्योंकि जीआई मसल्स में, क्योंकि इसका एंटी कोलिनर्जिक एक्शन है, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकता है। ये हाइपोथर्मिया इंड्यूस करता है, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी कम करता है। व्हाई? बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसके सारे अलग अलग फंक्शंस है, सब जगह बाइंड करता है। एक बोलता है ना कि बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, विकेट कीपिंग, उसको ऑलराउंडर बोलते हैं। दैट इज व्हाई दीज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स आर ऑल अबाउट, they are acting in a non specific way. They ये नहीं बोल सकते कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन नहीं है, नोन है, बट दे एक्ट थ्रू डाइवर्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. They don't have a fixed mechanism of action. That is why we are saying them as non-specific drugs. Clear है? Specificity और selectivity, ये दो words clear हैं? Selectivity, specificity पे doubt नहीं होगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स आगे बड़ी जरूरत पड़ेंगे, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एगोनिस्ट. एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट. एगोनिस्ट को बता करके बंद करेंगे, अगले क्लास में फिर करेंगे. नाउ दिस एगोनिस्ट क्या है, अभी तक आपको बताया. नाउ एक डायग्राम आपको दिखा है, बनाने में टाइम लग जाता है. यस, यू ट्राई टू सी दिस डायग्राम. लिखना नहीं है अभी, नोट्स तो मैं भेज ही देता हूं, आप चीजों को समझ लें, जहां डाउट है वहां पूछ लें. नाउ देयर इज अ ड्रग ए, एक ड्रग है ए जिसका नाम दिया ए, ठीक है, एक ड्रग है ए. ये ड्रग जो है अपने कंसर्न रिसेप्टर, किसी ना किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा. अगर उसका रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन है तो उसका कंसर्न रिसेप्टर को हमने आर बोला, वो उसका रिसेप्टर आर है. बॉडी में जाने के बाद ये ड्रग अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा. दैट इज व्हाई वी आर शोइंग प्लस साइन. ये दोनों का बाइंडिंग होगा, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन होगा. बाइंड करने के बाद एक फोर्स ऑफ बाइंडिंग से बाइंड करेगा, कितना फोर्स से चिपका हुआ है उसको भी हम तो दैट वी आर द रेट ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द रिसेप्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी आर शोइंग एज रेट इज के, एंड इट this reaction is going in the forward direction because drug receptor complex is forming. That is why we are citing the rate as k plus 1 because for reaction is proceeding in the forward direction. और हो सकता है रिसेप्टर से ड्रग टूट के वापस अलग हो जाए तो k माइनस, इस रेट कांस्टेंट को k माइनस बोले हैं. एनीवे, इस रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बाद में लेंगे. सो फॉर द टाइम बिंग दिस ड्रग इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. And after that, what happens? There is drug receptor complex is formed. This is the drug receptor complex. Complex होने के बाद क्या होगा? ड्रग अपने रिसेप्टर को बाइंड कर लिया. मैं अपने आके कुर्सी पे बैठ गया. बैठने के बाद कुछ काम होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कुछ काम करना चाहिए. आके चुपचाप बैठे हुए हैं, आज स्ट्राइक किया, कोई काम नहीं करेंगे. और आने के बाद कुछ काम किया. तो दोनों केस में चेयर पे बैठा, अपने कंसर्न प्लेस पे, अगर रिसेप्टर बोले तो उस पे बैठा. तो इन दैट केस दो हाइपोथेसिस हो सकता है. द ड्रग आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर मे बी एक्टिवेटेड. ये स्टार जो देख रहे हैं ना आप, ये एक्टिवेटेड कंडीशन को, द रिसेप्टर मे बी एक्टिवेटेड. द रिसेप्टर मे शो सम सॉर्ट ऑफ चेंज. जैसे चाबी ताले में लगाया, घुमाया तो उसका लीवर खुल गया तो ताला खुल गया. अब खाली लगा करके फॉल्स चाबी अपने बच्चे को बना देगा, घुमाते रहो तो कुछ नहीं होगा उससे. चाबी तो लगी ना उसमें. तो बाइंडिंग होने के बाद देयर कैन बी टू वेज. एक जो है द रिसेप्टर मे बी एक्टिवेटेड, एंड वंस द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड देयर मे बी प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. ठीक है. इन द सेकेंड केस व्हाट कैन हैपन, द सेकेंड ड्रग बी इज देयर which is binding to the receptor. Same receptor से ये drug B जो है वो bind कर रहा है. और bind करने के बाद क्या है कि drug receptor complex बना. The drug was B and receptor was R, so drug receptor complex was BR. लेकिन यहाँ कोई activation नहीं हुआ. The drug could not activate the receptor. ये activation नहीं हुआ यहाँ पे. No activation of the receptor.
तो इसके बाद क्या हुआ, नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सिंपली आके कुर्सी पे बैठ गया, आज स्ट्राइक किया, कोई काम नहीं होगा। इट इज लाइक दैट। सो दोनों रिस्पॉन्स, दोनों टाइप का काम हो सकता है। इफ द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, concerned pharmacological response will be precipitated. If the receptor is not activated, there won't be any response. अब वैसे ड्रग्स, those drugs, A जो है, those drugs which are producing pharmacological response after binding to the receptor, they are, वैसे को good teachers बोलेंगे जो आने के बाद बैठे कुछ पढ़ाएं, तो उनको हम बोलते हैं agonist बोलते हैं। They are known as agonist. Those drugs which after binding with the receptor excite and activate the receptor and produce concerned pharmacological response, those drugs are known as agonists. ठीक है? Those drugs which bind to the receptor, but after binding the receptor there is no activation of receptor and there is no pharmacological response is there, those drugs are known as antagonists. So एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? Who will answer? What is the similarity between agonist and antagonist? Sir, in both cases there is affinity, but efficacy is only in first. So yes, very good. In both the cases, the drug is either the drug A or B. It is binding to the receptor. बाइंडिंग तो हर किसी में हो रहा है, वो अपने रिसेप्टर को बाइंड कर रहा है। बाइंडिंग क्यों होता है ड्रग का? बिकॉज द ड्रग इज हैविंग एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। नाउ देयर वर टू टर्म्स एफिनिटी, एक ड्रग ए है एंड द सेकंड ड्रग वाज बी। सो ड्रग ए वाज देयर वर टू टर्म्स, एफिनिटी को हम एएफ बोलते हैं, या पूरा ही लिखते हैं एफिनिटी। Now this A drug was having affinity, इसको हम प्लस, affinity को अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में हम डिनोट करें, if it is having 100% affinity, we are assigning as +1, ठीक है? This B drug was also binding to the receptor, it was also having +1 affinity, ठीक है? लेकिन इसका इफिकेसी क्या है? इसका इफिकेसी जो है इफिकेसी को एक और टर्म बोलते थे इंट्रिंसिक एक्टिविटी, शॉर्ट में इसको आईए बोले। नाउ दिस ड्रग ए वाज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, तो इसकी इफिकेसी भी +1 थी। बट दिस एंटागोनिस्ट, दिस बी ड्रग वाज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, दैट इज व्हाई इट वाज हैविंग +1 एफिनिटी, बट इट वाज नॉट हैविंग एनी इफिकेसी। इसको लड्डू देंगे, 0, कुछ काम तो किया नहीं, काम धाम, आके बैठ गया कुर्सी पे, तो ये इसका इफिकेसी 0 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एगोनिस्ट, दिस वाज एगोनिस्ट, ये जो था एगोनिस्ट था। अब आपको अगर डेटा बता दिया जाए किसी ड्रग का एफिनिटी और इफिकेसी का डेटा, और आपको पूछा जाए कि बताओ कि एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है, तो आप बता देंगे। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों ड्रग्स ही हैं, बट उनका काम अलग है, एक काम करता है, एक नहीं काम करता है। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज देयर, ये भी हो सकता है कि आधा काम करे, आधा मन से काम करे, आके बाइंड कर लिया, अब डर है कुछ करना, थोड़ा बहुत काम किया, 100% काम नहीं किया। ये 100% वर्क है, ये 0% वर्क है, हो सकता है 50%, 40%, 60%, 80% काम हो। दिस एफिनिटी वाज 100%, लेकिन ये जो है 0.5 हो सकता है, या 0.6 हो सकता है, या 0.4 हो सकता है। इट इज नॉट कंप्लीट, और 0 भी बिल्कुल नहीं। तो वैसे में इसको एगोनिस्ट बोलेंगे या एंटागोनिस्ट बोलेंगे? हु विल आंसर? पार्शियल एगोनिस्ट बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट बोलेंगे। फुल एगोनिस्ट नहीं है, ये पार्शियल है, पार्शियल ही काम किया, इसलिए इसको पार्शियल एगोनिस्ट। यस सर। पार्शियल एगोनिस्ट क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है कि पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है?
नो सर, 0 से 1 हो सकता है। अच्छा, अब पार्शियल एगोनिस्ट क्यों बोलते हैं? एगोनिस्ट मतलब काम करने वाला, एंटागोनिस्ट मतलब काम नहीं करने वाला। अगर इसका 0.5 आधा से ज्यादा हो, 0.5 से ऊपर हो, तो बोलेंगे एगोनिस्ट। अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी नेशनैलिटी इंडियन और पाकिस्तानी दोनों टाइप का है, लेकिन मोर इंडियन है, तो बोलेंगे कि इंडियन है। मोर पाकिस्तानी है, तो एक इंडियन या पाकिस्तानी बोलना है तो बोलेंगे पाकिस्तानी है। अगर इसका इफिकेसी 0.4 होता तो इसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलने से अच्छा रहता पार्शियल एंटागोनिस्ट बोले। आधा तो काम नहीं करता, आधा से ज्यादा, 0.6 नहीं काम कर रहा, 0.4 ही कर रहा है, तो इसको हम पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। बी अगर एंटागोनिस्ट था, सर एंटागोनिस्ट तो काम करता ही नहीं है ना सर, हाँ नहीं करता है, एगोनिस्ट ही होगा। तो ये भी पूरा कहाँ काम किया? नाउ दिस, अब ये जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है, यहाँ इसके बीच में जो ड्रग्स हैं जो काम कर रहे हैं और आधा अधूरा काम कर रहे हैं, उनको एगोनिस्ट बोले कि एंटागोनिस्ट बोले? दो कॉन्सेप्ट है कि 0.4 काम कर रहा है, 0.6 काम नहीं कर रहा है, उसमें पॉइंट नहीं काम करने वाले को हम एंटागोनिस्ट बोल रहे थे, काम करने वाले को एगोनिस्ट बोल रहे थे। तो अब है कि किसके साइड का नोमेनक्लेचर हो, एगोनिस्ट का हो कि एंटागोनिस्ट का हो? एगोनिस्ट 0.4 आप बोलोगे काम कर रहा है 0.4, तो उसको एगोनिस्ट, तो हम बोलेंगे 0.6 नहीं भी तो काम कर रहा है, उसको एंटागोनिस्ट बोलना चाहिए। तो अब इसमें बहुत डिबेट है। पार्शियल एगोनिस्ट वर्ड भी एक्सेप्टेड वर्ड है, पार्शियल एंटागोनिस्ट वर्ड भी एक्सेप्टेड वर्ड है, और इसमें हम लोग वही फंडा रखते हैं कि आधा से ज्यादा अगर काम नहीं कर रहा, अगर 0.2, 0.1, 0.15 है, तो बोलेंगे पार्शियल एंटागोनिस्ट है। वो 100% एंटागोनिस्ट नहीं है, थोड़ी सी उसकी एगोनिस्टिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर 0.5 से ऊपर है, 0.6, 0.7 है, तो बोलेंगे कि वो फुल एगोनिस्ट नहीं, थोड़ा सा कम है एगोनिस्टिक एक्टिविटी। सो यहाँ पे अब 4 टर्म्स हो गए, फुल एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट भी नहीं बोलेंगे, अब इसके आगे फुल वर्ड लगाएंगे, फुल एगोनिस्ट। या अगर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये है, तो बोलेंगे एगोनिस्ट मतलब फुल एगोनिस्ट ही समझेंगे, और फुल एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाए। अब इसमें फुल एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, और एक और है इनवर्स एगोनिस्ट है। इनवर्स एगोनिस्ट बता करके आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, थोड़ा और पढ़ के आइए। इनवर्स एगोनिस्ट भी होता है, इस पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए, कुछ पढ़ के आइए। आप बोलेंगे कि एगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, इनवर्स एगोनिस्ट क्या हो सकता है? उल्टा काम करेगा क्या? हाँ उल्टा काम करेगा। बोले कि आगे हम कुर्सी पर बैठ गए, आप पढ़ाएंगे नहीं, हम कुर्सी तोड़ेंगे या कुछ और काम कर सकते हैं, या आग लगा दें। वैसे भी तो होते हैं कि भाई डिस्ट्रक्टिव काम करे, निगेटिव डायरेक्शन में काम करे। जो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर उसका हार्ट रेट नॉर्मल, उसका वर्क हार्ट रेट बढ़ाना तो घटाने लगेगा। एंटागोनिस्ट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट इनवर्स डायरेक्शन में अगर काम करे, वो कैसे होता है, क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अभी तक तो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट या पार्शियल एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म देखा कि रिसेप्टर एक्टिवेशन है, फुल रिसेप्टर एक्टिवेशन है तो एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट। जीरो रिसेप्टर एक्टिवेशन है तो जीरो एंटागोनिस्ट बोले। और अगर पार्शियली डिग्री ऑफ 10%, 20%, 30%, उस हिसाब से हम पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बोले। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा और देखिए।